Hello students, yes, I'm back with a new session and first of all, welcome back to Real Academy where we are going to deal up again with a social science topic over here. So I'm Shilpa Shantakumar again in front of you talking about the smaller concepts or either some of the important topics from history or either political science or either geography or economics, as I'm going to deal up with the social science topics out over here. So students, in the last live session, we came across with different topics regarding different standard. Today, I'm going to focus on a topic where we are going to talk on international affairs. Quite interesting, isn't it or not? So if you find or you have any sort of interest in international affairs, make sure you're commenting below so that we can start across with the debates like understanding the current scenario of India's international affairs or the Indian international relations. So students, when I'm saying this topic, it is from 9th SSC board, from a political science concept. Like I've always asked my kid, they never had an interest in politics because they feel it's a dirty game. But it is not. Actually, the players in the game is somewhere or the other found to be dirty. So automatically that entire game is calling to be as dirty, isn't it or not? But when you try to understand the relations, the bonds with the international countries or with the international fraternities, being a nation becomes quite mandatory. So जैसे अक्सर मेरी माँ अक्सर ये कहती है कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ जैसा बॉन्ड होता है वो हमारे नॉर्मल आम जिंदगी में भी होती है. लाइक यू शुड क्रिएट अ गुड रिलेशन विथ योर नेबर हाउसेस. जो आपके नेबरहुड में जो लोग होते हैं ना उनके साथ अच्छे रिलेशंस रखने चाहिए क्योंकि हर दिन सुबह उनका ही तो चेहरा देखना है. तो जैसे ही हमारे आम जिंदगी में ये बात चलती है ना उसी तरीके से एक देश को भी इस बात पे एक्सेप्ट करना पड़ता है. द कंट्री शुड डेवलप अ गुड बॉन्ड और आइदर शुड हैव एटलीस्ट a good relations with our neighboring countries. So if not about neighboring countries, but at least with other international countries, so that there should be the emergence of interdependence, so that there should be an emergence of good diplomatic relations or either a bilateral or a multilateral relations. Because one thing students, जैसे हम perfect नहीं होते हैं ना वैसे देश भी perfect नहीं होता. देश में भी कुछ खामियां होती है और उन चीजों को फुलफिल करने आप और मेरे जैसे आम लोगों के नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए इंटरनेशनल बाउंड्रीज या फिर इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ रिलेशंस बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. और उस रिलेशंस को बनाए रखने के लिए इट्स मैंडेटरी दैट यू शुड कम अक्रॉस विथ व्हाट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. सो स्टूडेंट्स, व्हेन आई एम सेइंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, बहुत सारे सवाल अभी आपके दिमाग में आते होंगे कि फॉरेन पॉलिसी लाइक सीरियसली क्या ये जरूरी है इस पे बात करना? बहुत ज्यादा जरूरी है. एज आई टोल्ड यू, इट्स मैंडेटरी टू हैव अ ग्रेट इक्वेशन with your neighboring countries, because if you're not having a proper equations, somewhere or the other it's affecting. Like for example, look at India's and Pakistan relations going on. It's been 1947, still we are working on it. अब तक चाय पे चर्चा बनी नहीं है, सक्सेसफुल हुई नहीं है. अगर एक तरफ से ये रेडी है तो वो एक तरफ से राजी नहीं है. बीच में कौन फंस रहा है आप जानते हो और आप जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो. सो एट दैट सिनेरियो अगर हम इंडिया पाक रिलेशंस देखते हैं तो आपको क्लियर इंडिकेशन है कि किस तरीके से या कौन से ट्रैक से जा रहा है. अगर वही जगह पे मैं सिनो इंडियन रिलेशंस कहूं, आई मेंट टू से इंडो चाइना रिलेशंस. तो एक वक्त था हिंदी चीनी भाई भाई वाली जो कॉन्सेप्ट थी वो चलती थी. 1962 में जैसे ही सिनो इंडियन वॉर हुआ उसके बाद मैकमोहन लाइन को लेकर या अरुणाचल प्रदेश को लेकर अक्सई चीन एरिया को लेकर हमारे बीच में लैंड डिस्प्यूट्स रही है और इन्हीं डिस्प्यूट्स के वजह से नेबरिंग कंट्रीज या फिर हमारे रिलेशंस अप एंड डाउन हो रहे. सो द क्वेश्चन कम्स, इज इट सो नेसेसरी टू हैव अ गुड फॉरेन पॉलिसी और शुड वी हैव? Let me tell you, yes. The way you create your bond with your friends, that's how it's mandatory for a nation to create relations with the other abroad countries, to make each other self-sufficient, to make each other available. And for that, we came across with the adoption of this policy
called foreign policy. So हिंदुस्तान जब आजाद हुआ 1947 में, उस वक्त it was quite mandatory to develop her internally भी और externally भी. And that's where, my dear students, we came across with the adoption of which policy? Foreign policy. और भी डिटेल में जानेंगे जब फॉरेन पॉलिसी की मैं बात कर रही हूं. Look at over here. It is a concept which make us understand the nature of foreign policy. We get it very clearly कि किसको कितना देना है, किससे कितना लेना. ये सिंपल सा फंडा है, एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, रिलेशंस अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखो. That's it. I'm totally trying to focus upon one thing, and that is basically what sort of relations we have been created from the past century. And are we the part of international system or not? Or if yes, what is the relations which do we create or what have been created from the past 7 decades or 8 decades becomes the biggest question, right? So let's go ahead and look at this. You can see this is a globe, right? And you can find different flags have been engulfed over here. And that's where the monopoly come across over here when you try to look into what? One thing, and that is diplomacy. Students, diplomacy एक ऐसी चीज है ना जिसके बिना international affairs कुछ नहीं है. The diplomats who try to go from one country to other country so that they can create a good bond. It's mandatory. हमारे language में हम कह सकते हैं that to create a mediator, right? So that you can represent your grievances, so that you can represent your solutions, so that you can represent each and every nations. So diplomacy, if you look into that, it's a key term. When I'm saying the international world politics, diplomacy is the key term of this entire concept called फॉरेन पॉलिसी. हालांकि हमारे रोज के दिनचर्या में, रोज के लाइफ में जो भी हमारे डिसीजंस होते हैं वो भी डिप्लोमेटिकली होते हैं. हम यस भी बोलना चाहते हैं, नो भी बोलना चाहते हैं, किसी के गुड बुक्स में नहीं रहना चाहते, किसी के गुड बुक्स में रहना चाहते हैं. वेरी मैनिपुलेटिवली ट्राई टू कम अक्रॉस विद दैट. सिंपल सा फंडा, बीइंग न्यूट्रल. It's very important. Try to make sure that only the good stuff is happening to your nations, right? So diplomacy becomes a key term when I'm saying international world politics or either international world fraternity. Let's go ahead, my dear students, and look into one thing very in detail. What exactly foreign policy is and how pivotal role have been played by foreign policies in India's international system is pretty much important. And that's how let's focus upon more important thing. जितने भी countries है ना, these countries are the members of which system? International system. किस system के हिस्सा है वो? International system के. और उसमें से एक हिंदुस्तान भी है. India is also a part of that international system. We are also part somewhere or the other with the third world criteria. So when you look into that, one important and a major concept is major interdependence. That is mutual interdependence when I'm saying. जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, एक हाथ से लो, एक हाथ से दो. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. अगर मेरी कंट्री में मुझे आयरन की जरूरत है और आपके कंट्री में अगर वाटर की जरूरत है, and if both has that, let's have a vice versa. Let's exchange it. Let's create a decree. Let's have a deal upon it. And when you're trying to have deal upon it, automatically you come into the existence of which concept? That is mutual interdependence. So my dear students, foreign policy का सबसे important facet या फिर सबसे important process या फिर सबसे important stage एक ही चीज है, इंटरडिपेंडेंस. कोशिश किया जाता है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज है, बहुत सारे हैं, राइट? सो इनके बीच में जो सेल्फ रिलायंस का जो कॉन्सेप्ट है वो अक्सर इनगल्फ रहे. इट्स क्वाइट मैंडेटेड. इट हैज टू बी देयर. A country has to be self-reliant. If she is not there, then she should make sure that there has to be a development of concept. सेल्फ रिलायंस खुद को कैसे बनाए, ये कंट्री को सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब क्वेश्चन ये आता है कि सेल्फ रिलायंस किन चीजों में? फूड सिक्योरिटी हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, मिलिट्री माइट हो सकता है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है, पर कैपिटा इनकम हो सकता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर योर बैरियर्स and making sure that your nation is trying to become more and more progressive day by day. And for that, this concept of self-reliance is pretty much important
when we are calling it as foreign policy. So yes, the efforts is needed. Like for instance, if I'm trying to develop a good nation with the opposite country, and that opposite country does not possess any sort of interest in me or in my country, how am I going to develop that relation becomes the biggest question. So the only thing is what? Mutual understanding, mutual trust, mutual faith. That's how the pillars of foreign policy do exist. Talking about the benefits is pretty much important. What are you needing? You need this? Okay, go ahead. That's what I wanted. So that's how the mutual trust have been blocked over here. And on the other way, when any of the country has to decide about their nation, they think about, yes, let's have a friendly relations. As I told you, take it and give it back. That's it. Ek haath se lo, ek haath se do. And you need to make sure that the bloc participate in whatever you have been engulfing. It's pretty much important in the foreign policy. So at that scenario, the positioning becomes quite important in the international relations, as we call it as IR. So IR में इंडिया का फोकस सिर्फ प्रोसीजर्स क्या है या फिर इंडिया किस तरीके के रिलेशंस बनाता है या बना रहा है या बनाना चाहता है becomes the major question over here. But you need to understand, whatever relations you're creating, it's on the basis of what? Thoughtfully. The decisions should be pretty much sure and firm that it is not affecting your international relations and not yourself also. ना वो खुद को बिगाड़ रहा है आपको, ना वो किसी और को बिगाड़ने दे रहे, या फिर आपकी सिस्टम इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप स्ट्रांग तरीके से फर्म डिसीजंस लेकर जाएंगे और थॉटफुली लेकर जाएंगे by making sure all the criterias as a nation. That's what foreign policy talks about. So the theoretical framework, when you look into that, the decisions which has been taken on the international level, my dear students, it's known to be as what? Foreign policy. So basically, the country, every sovereign and independent country is automatically depends upon each other and they decide what is right and what is wrong for me. What is right for the nation? What is right for the people of the nation? How does it should get inculcated when you're talking about the development or when you're talking about the universality in the nation so that you can come across with lack of issues, right? So foreign policies are the important concept which helps the nation externally. And yes, it's pretty much needed. Not only internally, but external relations are also mandatory. And for that, it's mandatory that you start create relations with the other countries. Come across with the next, and that's we have national interest. One of my favorite topic. Why I'm saying one of my favorite topic, मतलब मेरा भी कुछ अगर points है, या फिर I being an individual or I being a citizen of this nation, even I might be having some sort of, I would say, thinking about my nation or a growth of my nation. Even I might be having my own thought process for my nation. So whatever it is, what is my interest is going to be my nation's interest. So when I'm saying foreign policy, students, your national interest or the nation, it's been totally focused, has been culminated into what? A foreign policy. So India में जब आप foreign policy की बात करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट और फॉरेन पॉलिसी ये दोनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दोनों ही चट्टे बट्टे यार एक दूसरे के, एक के बिना कमजोर है दोनों, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट है तो फॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि देश क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, उनकी नीड क्या है, उनकी पर्पस क्या है और किस हिसाब से दे आर गोइंग टू गेट बिकम अ सेल्फ रिलायंट और they are going to get economically so sophisticated. For all that things, for all that progressive and development, a nation should develop her own national interest. Because that's how, once you create your interest, automatically you're leading your nation towards a policy. So when I'm saying a national interest, it has been grown through the policy called foreign policy, जिसे हम कहते हैं fostered. Growth in the sense fostered, जहाँ पे you try to implicate over there, right? So coming back, when you try to understand foreign policy, it's mandatory to understand the concept of national interest.
What is the need of an hour? Who needs it? Why do they need it? What is the purpose behind it? All those WH questions should get answered under the national interest. But जब आप national interest की बात करेंगे, ये कहीं ना कहीं देश की आजादी के साथ और उसी के साथ देश की sovereignty, independence and sovereignty, this both should be safeguarded. That is primarily the objective behind the concept of national interest. So when you try to work on independence and the sovereignty, automatically you start putting effort so that you can achieve the economic development. So दोस्तों, जब आप economic development की बात करती है, अगर आपकी देश आर्थिक स्थिति में या फिर आर्थिक व्यवस्था में आगे बढ़ रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आगे जा रही है, या फिर इकोनॉमिकली हम कहीं ना कहीं अपने पिलर्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमारी देश एक नेशनल पावर कल्मिनेट कर लेती है. सो इट्स मैंडेटरी कि आप भी इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली, रिलीजियसली, विद ऑल दोस फैक्टर्स स्ट्रॉन्ग रहे, क्योंकि आपका नेशन अगर स्ट्रॉन्ग है इन ऑल दिस फैक्टर्स, automatically your nation is trying to build a good sort of instance for a foreign policy. And yes, that's where you're trying to put your prints in the scenario of foreign policy. So I hope I'm clear with that. Let's get back to the next topic. When I'm saying foreign policy or either a national interest, different factors have been exhibited in the concept of national interest in any of the country. इस कंट्री को अगर आप देखोगे तो कंट्री के अंदर अलग अलग नेशनल इंटरेस्ट है. फिलहाल हम इंडिया की तरफ से देख रहे हैं, बट हर एक कंट्री की अपनी खुद की इंटरेस्ट होती है और उन्हीं इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए वो अपने फॉरेन पॉलिसी पे वर्क करने की कोशिश करते हैं. सो जब बात अगर इंडिया की आएगी, वी मेक श्योर दैट देयर इज एन एग्जिस्टेंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर कंट्रीज इंडिपेंडेंस, working for the sovereignty of the nation, making sure that entire factors or any different dilemma which has been affecting integrity should be removed. So we should maintain the instance of integrity in every different steps of our decisions and also in the policies. So these are our national interests. My dear students, country's independence, sovereignty, integrity, these are considered to be as what? National interests. And automatically, when they are developing, we are resulting ourselves as an economic development. क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारा national interest है. Economically जितना ज़्यादा आप strong होगे, automatically आपका national interest और भी strong हो जाएगा. So if you look into this nation, if any of the nation who is economically weak, कहीं ना कहीं वो अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने में वीक हो जाता है. वी कांट अफोर्ड दैट. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एज अ नेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकम्स द बिगेस्ट फैक्टर so that you can try to understand the concept called national interest. So I hope I'm pretty much clear to balance all the factors under one platter, whether it's foreign policy, whether it's about IR, I mean to say international relations, or whether it's about this, that is independence, sovereignty, integrity, or economic development. When you try to amalgamate all of them under one platter, that's where it is considered to be as what? A successive foreign policy. स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया? और फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, मेक श्योर करते रहिए कि आप नीचे कमेंटिंग कर रहे हो, so that we can develop a sense of debate over there to understand what is foreign policy. So expecting your replies over there. Coming back over here to the picture जो आप देख सकते हो इस इमेज में, अगर मेरी देश की इंटरेस्ट ये है कि मुझे डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, तो यस, उसे करना चाहिए. लाइक आई स्टिल रिमेंबर 1962 में जो सिनो इंडियन वॉर हुआ था, वी वर नॉट प्रिपेयर फॉर दैट. एक सुबह अचानक हमें समझ में आता है कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है, एंड वी वर नॉट प्रिपेयर. That was a time, my dear students, like after 1947, 62, then 65, we have been getting engulfed into different wars. 1947 partition, creation of Pakistan, 62 Sino-Indian War, 65 again an Indo-Pak War, 1971 again an Indo-Pak War,
1999 again and Kargil war with Pakistan. So if you look into India, इंडिया ने प्लानिंग कमीशन बनाते हुए 5 ईयर प्लान शुरू किया था. स्टार्टिंग के 5 ईयर प्लान में इंडिया ने कभी भी मिलिट्री की बात नहीं की, उसे कभी भी नेशनल इंटरेस्ट में नहीं रखा. बट जैसे ही 1962 और 65 हुआ, वी स्टार्टेड डेवलपिंग द थॉट प्रोसेस. इट्स मैंडेटरी फॉर अ नेशन टू डेवलप हर मिलिट्री माइट so that she can safeguard the nation in the external boundaries also. So yes, this becomes the important concept of national interest and can get culminated into foreign policy also. Let's get back to the next, and that is the national interest and foreign policy. How do they try to go hand in hand? इसको बैलेंस कैसे किया जाए? क्योंकि अगर आप फॉरेन पॉलिसी कह रहे हो और उसी के साथ अगर आप ये भी कह रहे हो कि नेशनल इंटरेस्ट, तो सवाल ये उठता है कि दोनों को एक ही हथेली पे कैसे रखोगे? हाउ आर यू गोना बैलेंस इट, राइट? सोचने में थोड़ा बोरिंग लगता है कॉन्सेप्ट कि बैलेंस कैसे करेंगे. और ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जो रोज की जिंदगी में कोई बात नहीं करता. इट्स ऑल अबाउट नेशन. But being the younger generations of this nation, it's mandatory, my dear students, that you should also be aware about such topics called national interest and foreign policy. So please be with me and let's go further. When I'm saying foreign policy, it has basically to develop and foster or to grow national interest, whether it's about defense or whether it's about economic development. So when you try to look into them, national interest is considered to be as what? The goal. It's a goal. वो अटैक होना चाहिए. और दूसरी बात, अगर आप फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे तो वो एक रास्ता है. It's a pathfinder. For example, my goal is to achieve this. So to achieve that, you should have your own ideas, your own perceptions, your own developmental thinkings. So here, if a nation wants to achieve a national interest, to achieve that national interest, foreign policy becomes the pathfinder or either the roads which are supposed to be accepted and adopted. And that's why, my dear students, they both work hand in hand. Because once you develop a national interest, automatically the foreign policy is getting culminated and getting amalgamated. And that's how they both go hand in hand. Come back over here. Goals of nations change, like changes in the conditions and time, so that the national interest can also be changing. So अगर आप देखते हो कि अक्सर नेशन का एक ही इंटरेस्ट नहीं होता. There are so many different interests a nation has. It can be anything. Economically, politically, militarily, religiously, culturally, anything it can be. And the time changes, situation changes, automatically the amount of development starts happening over there. And yes, there would be need of an hour also where we expect for a change. So in accordance to that, our influence, that is the changes, are also been happening. So when these changes are happening, it has been seen, it has been reflected on foreign policy also. That's why, my dear student, we call it as what? A dynamic concept, which is quite flexible and rigid because you need to work with what? National interest. So I hope I'm pretty much clear with this. Look into this. It's a clipping. और इसमें बहुत सारे अनगिनत इंटरनेशनल कंट्रीज के फ्लैग्स हैं. बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से हम बॉन्ड्स क्रिएट करते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्रिएट अ डिप्लोमेसी प्लस अ डेवलपमेंट. And when you're saying India's changing foreign policy, yes, we are a part of new era. We are developing ourselves. We are thinking about the foreign policy in more detailed manner. Especially when I'm saying diplomacy, especially when it comes to bridging a development path so that you can create a good international relations, talking about different countries, different international affiliated organizations like SAARC, we have BRICS, we have been a part of G20, right? So we are trying hard to create a great bonds with the international countries so that we can maintain the level of foreign policy. So my dear students, a very important thing is what are the factors? Let me focus on one factor out over here. That is almost a geographical location. So if you look into that, any of the country,
ज्योग्राफिकल लोकेशन सबकी अलग होती है. जरूरी नहीं कि इंडिया अगर इतना सा है तो फिर अफगानिस्तान इतना होना चाहिए और उस हिसाब से उनकी नीड्स, बिल्कुल भी नहीं. हर एक कंट्री की ज्योग्राफिकल लोकेशंस अलग होती है, उनकी प्रॉक्सिमिटीज अलग होती है, टोपोग्राफी अलग होती है, रिलीफ अलग होती है, उसके अलावा प्रेसिपिटेशन अलग होती है, उस हिसाब से उनकी डिमांड्स भी अलग होती है. एंड व्हेन यू ट्राई टू लुक देम एज अ नेशन, कोई बड़े कंट्रीज है, कोई छोटे कंट्रीज है, एक चीज अक्सर ध्यान में रखें, वेदर द कंट्री इज अ ह्यूज कंट्री और अ स्मॉल कंट्री, every country has been interdependent on each other. It's pretty much important. Whether it's a ED nation, I meant to say a developed nation, or a ING nation, that is developing nation, कहीं ना कोई कंट्री एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. तो अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करेंगे, फॉरेन पॉलिसी में ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी हिसाब से यू ट्राई टू डेवलप द रिलेशन विथ योर नेबरिंग कंट्रीज and plus with some other countries. It's mandatory कि आप अपने relations इन countries के साथ रखें. जैसे कि कोई country है, कोई nations है जिनके पास long coastlines है, तो कोई rich है mineral wealth में. तो हर किसी की अपनी अपनी खासियत है और जिसको जिस चीज की जरूरत है या जिस तरीके से bonds create करना है, वो इस foreign policy में उस हिसाब से अपने bonds को create कर सकता है. For example, look at the size, the population, the topography, coastline, availability of natural resources. तो ये सब चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं effortlessly मदद करता है कि जानने के लिए, okay, this is a nation and this nation is going to help me out with this necessity. So yes, I have to have a good relation with that nation. So whether the nation is rich or poor, whether the nation is small or huge, it's all about the give and take. So that's how you can see it's about the foreign policy to develop a relation on the basis of geographical location. Next we have, that is political system. So when I'm saying a political system, one thing which you have to focus upon is that कि कैसे आप इस democratic system पे काम करेंगे. How are you going to work on that? So when I'm saying that you need to work on these entire concept, एक चीज ऐसा है कि इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में कहीं ना कहीं नेशनल पार्लियामेंट जो है वो अच्छा खासा रोल प्ले करता है. अगर आप देख रहे हो, सो यू कैन सी, हैव मार्क्ड इट ऑलरेडी, कि जो नेशन का जो पार्लियामेंट है वो बहुत ही एक इवॉल्विंग फैक्टर आता है जब आप फॉरेन पॉलिसी की बात करें, especially when it comes to different aspects, how to deal with the aspects of foreign policy. So it's mandatory the discussions, the raising question, जितने ज्यादा डिस्कशंस, जितने ज्यादा डेलिब्रेशंस होंगे, जितने ज्यादा टॉपिक पे बात की जाएगी when it comes to creating an international relations, automatically you see there is an existence of federal political system. और यही जो इंक्लिनेशन है जो कहीं ना कहीं एक फॉरेन पॉलिसी को शेपिंग के लिए लेकर आती है. लुक एट दिस इंस्टेंस, लाइक इवेंट्स इन श्रीलंका कहीं ना कहीं तमिलनाडु को इफेक्ट कर सकता है. अगर बांग्लादेश में कुछ इवेंट्स हो रहे हैं या कुछ ऐसा चीज हो रहा है, जैसे कुछ कैलामिटी हो रहा है, सो इट कैन अफेक्ट द वेस्ट बंगाल एंड ऑलमोस्ट द नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स. व्हाई? Because we are sharing an international boundary with those neighboring countries. So कल को अगर हमें कुछ हो जाए तो उन्हें भी इफेक्ट होगा, उन्हें कुछ हो तो हमें भी कुछ होगा. That's why you have seen that we did had a water boundary issues, a disputes with Bangladesh. It is sorted, but still you can find when you have such disputes, when you have such developments about the economics, you need to understand the foreign policy has much more to do with the parliament, right? So basically when you look into that, that's why I literally call the entire India's democracy as a theater of democracy, because the decisions, the deliberations, everything has to be done on the basis of parliamentary. So the checks and balances has to be on the basis of India's parliament. So whether it's about national interest, or whether it's about the entire foreign policy or the diplomacy with the international countries, my dear students, this is how the evolution of foreign policies does come. So I hope I'm pretty much clear, और इस वजह से आपको पता भी चल गया रहेगा कि national interest क्या है, foreign policy क्या है. Make sure you're liking this video if you loved it. Make sure you're subscribing the challenge. And उसी के साथ एक चीज फोकस करना कि वहीं पे bell icon है. Please make sure that you're clicking on that so that you can get
more updates, more info about such political international affairs. Thank you so much.